guys, this is Suryanchal. Welcome to the channel. This is a special video guys because in this video we are going to shoot a time-lapse video of uh, sun going is up. I mean the sunrise, the time-lapse of sunrise that I have told in my previous video. So without wasting any time, let's get started. This is time of 4:57 a.m. right now, and in something 2-3 minutes we have to leave for my terrace. Okay, so everything is ready, and yeah, let's go. Guys, right now I'm leaving. The sun is coming up right now, so without wasting any more time, all set. Yeah, let's go. Guys, I am in my terrace, and let's set the camera towards the sun. After that, we'll using application which is known as Framelapse. Let me tell you something about that app. Music licensing reimagined. Guys, when you open the Framelapse app, you will see this type of interface, and here is the HD section where you can select the resolution and bitrate according to you, and here is the frame interval, how many frames interval you need. I have selected 10 seconds. Okay, and here is the video duration, means how much you need. The output means the whole recording will record 2 hours 30 minutes, and the speed is 300x, and the video output will be 30 seconds. Yeah, so I will set the camera to this, and the sun is there. Music licensing reimagined. Some tips that I want to share with you is that when you are shooting a time lapse, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बार बार अपनी जगह चेंज ना मत करें, क्योंकि when you are changing your position extremely, what happen कि आप पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा और आप कभी टाइम लैप्स शूट ही नहीं कर पाओगे. इसलिए आप भले ही एक दिन पहले ही आ जाइए अपने लोकेशन पे, एंड देन आप देख सकते हैं कि मेरे को कहाँ पे अपना कैमरा लगाना है, और उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि मेरे को कितने टाइम तक शूट करना है, कितने टाइम पहले आना है, और मेरे को एक्चुअली में शूट क्या करना है. सन it means like you have to shoot I mean that you are interested in shooting the coming up sun towards you, and some people like only the when the whole location is dim, and after that it will when the sun goes up, it will the location gets bright, right? So, और दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगा कि ऑलवेज़ चार्ज योर फ़ोन, बिकॉज अगर आप 50% आपकी फ़ोन की बैटरी है और आप जानते हैं कि आपकी फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जानी है, तो आप टाइम लैप्स शूट ही नहीं कर पाओगे. जैसे ही आपका फ़ोन की बैटरी लो होगी, वीडियो भी बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि आपकी वीडियो करप्ट हो जाए. और फ्रेम लैप्स ज़रूर यूज़ कीजिए. ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बिकॉज़ आपके फ़ोन के बेसिक कैमरा एप्लीकेशन में ये ऑप्शन शायद ना दिया हो, क्योंकि बहुत सारे जो मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं वो सारे फ्रेम लैप्स एप्लीकेशन में दिए हुए हैं. इससे टाइम लैप्स शूट करने के लिए दैट इज़ द वेरी गुड ऑप्शन, राइट. एंड द नेक्स्ट टिप आई वांट टू गिव यू इज़ कीप योर फ़ोन स्टडी. अपने फ़ोन को बिल्कुल भी मत हिलाइए, क्योंकि अगर आप when the footage gets shaky, your footage will not look any more professional you want. I mean, आप एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज़ एवरीवन नो, राइट. अब अगली टिप मैं ये देना चाहूँगा कि
जब भी आपका टाइम लैप्स शूट हो रहा है तो उसके सामने कृपया करके प्लीज़ ना जाए, बिकॉज द टाइम लैप्स इज शूटिंग and when you goes front of the camera, what happened, it will capture all those things and your movements, and it won't look professional. Overall, when you going to crop this, you are going to losing quality, because some phones might not have 4K like me, because when you shoot in 4K, you get the flexibility of cropping, right? और अगले टिप के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है to shoot better time lapse. The next tip that I want to give you is always shoot in flat picture profile, right? I know the smartphone does not get this feature, but you have to create this manually by bumping up the exposure up to +3 or +7. The profit of bumping up the exposure is when in post you will get more flexibility to fix the, to play with colors, right? This means when you shoot in a higher exposure, you have to, you have the option to decrease the exposure according to you. When you decrease your exposure in post, you won't get the noise, but when you increase the exposure in post, you will get noise. It means you have to shoot in +3 or +7 exposure, because when you shoot in lower exposure, what happened, when you increase the exposure in post, your footage will get grainy and it won't look professional. Your footage will get cracked, मतलब बहुत ख़राब दिखने वाला वैसे में. और अब बात करते हैं अगले टिप के बारे में. The next tip is clouds in the sky. इट मीन्स जब भी आप टाइम लैप्स शूट करते हो तो अगर आपको आसमान में बादल दिख जाते हैं सूरज के साथ, तो वी ऑल नो हाउ प्रोफेशनल इट लुक्स. मतलब वी ऑल नो हाउ स्लो द क्लाउड्स वॉक और फ्लाई, राइट? बट इन टाइम लैप्स वी विल गेट द स्पीड इफेक्ट ऑफ clouds, right? So it look good with the sun. So always try to find the area where clouds in the sky with sun, right? uh, so let's move to the another tip. 5 tips that I use to shoot a better time lapse, and these are the 5 tips for you to shoot a better time lapse with using your smartphone. So if you're new to the channel and if you have approached this video or the channel today, so make sure you subscribe this channel and stay tuned for the upcoming 6 vlogs of attempting the time lapse of sunset or maybe sunrise, right? So the cinematic beat all of the golden hour is in 5, 4, 3, 2 and let's begin.